हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या और ये सेकंड पार्ट है आपका मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स का। फर्स्ट पार्ट कवर अप हो चुका है, दिस इज़ सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में सबसे पहले जो टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, आइए शॉर्ट न्यूज़ के बारे में देखते हैं। राइट, तो शॉर्ट न्यूज़ के बारे में फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, साइंस और इकोनॉमिक अफेयर्स ये कवर अप कर लिए थे। मेजर टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे इसके। मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर हम इंटीग्रेटेड कर रहे हैं। राइट, अभी शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं मार्च और अप्रैल की। मार्च अप्रैल में सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुआ था मैनुएला रोका बोटे। राइट, मैनुएला रोका बूटे, मैनुएला रोका बूटे ये पहली वुमेन है इन द कंट्री टू होल्ड द पोजीशन इक्वेटोरियल गिनिया में। तो इक्वेटोरियल गिनिया फ्रेंड्स ये कंट्री है, इक्वेटोरियल गिनिया, और यहाँ पे ये पहली वुमेन है जिन्होंने पोजीशन को होल्ड करा है। राइट, मैनुएला बूटे, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी फर्स्ट वुमेन कोई पोजीशन होल्ड करती है या कोई टाइटल अचीव करती है, वो इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो इसी के साथ ये मैनुअल बूटे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, याद रखिएगा। देन हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर वेरी फेमस, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? क्रिकेट। राइट, हरमनप्रीत कौर, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनाया गया है। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पूमा का। राइट, तो ये पूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऑल राइट, आगे देखते हैं। देखिए अब एमी बेरे, एमी बेरा, एमी बेरा रिसेंटली अभी अपॉइंट की गई हैं यूएसए हाउस की परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस की मेंबर। तो देयर इज़ अ यूएसए परमानेंट हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस, परमानेंट हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस, और उस डिपार्टमेंट में एमी बेरा रिसेंटली अभी अपॉइंट की गई हैं। राइट, नाउ लेट्स सी शमिका रानी। शमिका रानी रिसेंटली अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम में अपॉइंट की गई हैं। इकोनॉमिक काउंसिल टू पीएम में अपॉइंट की गई हैं शमिका रानी। राइट, मैनुएला बूटे देख लिया हमने, हरमनप्रीत कौर, एमी बेरा एंड शमिका रानी। नाउ अप्सरा अय्यर, ये पहली वुमेन है अप्सरा अय्यर, जो कि फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द कम्युनिटी हार्वर्ड लॉ स्कूल में, जो कि कम्युनिटी की ये एक पार्ट है हार्वर्ड लॉ स्कूल में, अप्सरा अय्यर। राइट फ्रेंड्स, ओके। अब लेट्स कम ऑन टू मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के हैं। राइट, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, इनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है? ये CEO बने हैं किसके? नीति आयोग के 2023 में। सो एट प्रेजेंट CEO ऑफ नीति आयोग इन 2023 इज मिस्टर सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। राइट, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, राजेश राय, ये MD बने हैं टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के। ओके, देन राजीव रघुवंशी, राजीव रघुवंशी ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। राइट, कौन? राजीव, मिस्टर राजीव रघुवंशी, मिस्टर राजीव रघुवंशी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। ऑल राइट, सो ड्रग से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा मिस्टर राजीव रघुवंशी सॉल्व करेंगे, इस तरीके से याद कर सकते हैं। राइट, देन अजय बंगा, अजय बंगा ये प्रेसिडेंट बने हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं अजय बंगा। तो ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। राइट, सो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। देन विल डू रणवीर सिंह, रणवीर सिंह तो वेरी फेमस एक्टर। राइट, सो रणवीर सिंह पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। राइट, देन वी हैव दी
साल हो मोटो, ये अभी, और इनके साथ एक और हैं हिकानी जखालू, हिकानी जखालू, और ये दोनों ही नागालैंड की स्टेट असेंबली में टू वुमेन्स फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट की गई हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साल्हो मोटो और हिकानी जकालू, ये इंपॉर्टेंट है। रणवीर सिंह रिसेंटली पेप्सिको के बने हैं, हरमनप्रीत कौर प्यूमा की बनी है, क्विक रिवाइज कर रहे हैं। BVR सुब्रमण्यम CEO हैं नीति आयोग के, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, राजीव रघुवंशी ड्रग्स रिलेटेड हैं, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हैं, राजेश राय MD हैं टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के, राइट। अप्सरा अय्यर हार्वर्ड लॉ स्कूल में की कम्युनिटी में एक मेंबर हैं। शमिका रानी, इनको इकोनॉमिक एडवाइज़र टू PM हेल्ड किया गया है। अमी बेरा, ये USA की कमेटी ऑन इंटेलिजेंस की एक मेंबर हैं, राइट। और मेनुएला बूटी, ये आपकी फर्स्ट वुमेन है जो कि इक्वेटोरियल गिनिया में डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड करा है, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ बोला तिनुबू। बोला तिनुबू ये क्या है? ये बोला तिनुबू प्रेसिडेंट बने हैं, किसके प्रेसिडेंट बने हैं? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ये प्रेसिडेंट बने हैं नाइजीरिया के, राइट। बोला तिनुबू नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, बोला तिनुबू। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वोवैन थाउन। वोवैन थाउन ये एंटी करप्शन प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, एंटी करप्शन प्रेसिडेंट वोवैन थाउन, राइट। अब रश्मि शुक्ला इन्हें DG बनाया गया है, शास्त्र सीमा बल, ये फोर्स है एक, शास्त्र सीमा बल, इनको DG बनाया गया है। किसको? रश्मि शुक्ला को, राइट। रश्मि शुक्ला को DG बनाया गया है, किसका? शास्त्र सीमा बल। और एंटी करप्शन के प्रेसिडेंट कौन है? वैन वोन थाउन। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला तिनुबू, ठीक है। क्विक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट, एलिस बियालित्स्की, ये बेलारूस नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला है पीस में, किसके रिस्पेक्ट में मिला है? विद रिस्पेक्ट टू स्मगलिंग। सो बेलारूस में इन्हें, ये बेलारूस की हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला है विद रिस्पेक्ट टू फाइट अगेंस्ट, राइट। और रिसेंटली ये हेल्ड करी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मगलिंग। तो अभी ऐसा है कि इनसे वो नोबेल प्राइज़ जो पीस में इनको मिला है वो इनसे लेने की बात करी गई है। वाई? बिकॉज शी हैज़ बीन हेल्ड इन द केस ऑफ स्मगलिंग, राइट। एलिस बियालित्स्की, ओके। नाउ तेजल मेहता रिसेंटली अभी ओथ एज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ USA स्टेट ऑफ Massachusetts, right? So he became the chief justice in the state of Massachusetts, right? ये एलिस बियालित्स्की याद रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया था, बट रिसेंटली शी हैज़ बीन कन्विक्टेड इन द केस ऑफ स्मगलिंग एंड दैट इज़ वाई इनसे वो जो इनका ऑनर है नोबेल प्राइज़ इन पीस वो इनसे ले लिया जा रहा है। तेजल मेहता, शी इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस वेयर इन द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स, राइट। ओके, अब SS दुबे, ये कौन है? SS दुबे ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज बीइंग हेल्ड बाय मिस्टर SS दुबे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़े से और अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे। मनिक साहा रिसेंटली वेरी फेमस, ये CM अपॉइंट किए गए हैं, कहाँ के? त्रिपुरा के CM अपॉइंट किए गए हैं। कौन? मनिक साहा, राइट। देन वी हैव कॉनरेड सांगमा, ये भी बहुत फेमस है, ये CM है मेघालय के। कॉनरेड सांगमा इज़ अ CM ऑफ मेघालय एंड मनिक साहा इज़ अ CM ऑफ त्रिपुरा, राइट। ओके, नाउ शैलजा धामी, ये कौन है? शैलजा धामी फर्स्ट वुमेन है टू कमांड द यूनिट ऑफ इंडियन एयर फोर्स, राइट। सो शैलजा धामी, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू कमांड एयर फोर्स,
So she is the first woman to command the Air Force. Then Sachin Tendulkar, very famous personality, स्वस्थ इंडिया मिशन के सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन वर्ल्ड के फर्स्ट हैंड एम्बेसडर उनको बनाया गया है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को स्वच्छ इंडियन मिशन, सेवलॉन स्वच्छ इंडियन मिशन में वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर इज बीइंग अपॉइंटेड, सचिन तेंदुलकर, राइट। देन विल सी नेफ्यू रियो, ये सीएम है किसके, नागालैंड के। कॉनराड सांगमा सीएम है मेघालय के, नेफ्यू रियो सीएम नागालैंड, एंड मानिक साहा इज अ सीएम ऑफ त्रिपुरा, राइट। नाउ गीता राणा is a first woman officer and she commanded the Ladakh sector with respect to China, मतलब the eastern sector she commanded, right. So Geeta Rana, and she is the first woman and she commanded the eastern sector of Ladakh, right, with respect to China, Geeta Rana. After this अरुण सुब्रमण्यम फर्स्ट साउथ एशिया के जज अपॉइंट हुए हैं, अरुण सुब्रमण्यम, फर्स्ट साउथ एशिया के जज, राइट। देन रामचंद्र पोडेल, ये नेपाल के 2023 में इन्हें अपॉइंट किया गया। राम साहा प्रसाद यादव, ये नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट है, राम साहा, हालांकि not so important, right, from the exam perspective. Okay, now G कृष्ण कुमार, ये पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन है, right. Then who is being called as the Mira of modern India, important, Vani Jayaram is called as the Mira of modern India, right. So ये ध्यान रखिएगा। देन याया टसो बर्ड पैराडाइज फॉर ब्यूटिफुल लेक इज याया टसो इज अ बर्ड पैरासाइट फॉर अ पैराडाइज फॉर ब्यूटिफुल लेक, राइट। देन वी हैव द मार्कोनी प्राइज इज हरि बालकृष्णा इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। सो हरि बालकृष्णा got the Marconi prize, right. So Hari Balakrishna got the Marconi prize for communication technology, right. Then UNESCO Peace Prize किसे मिला है, एंजेलिना मार्केल को मिला है। तो एंजेला मार्केल got the UNESCO Peace Prize, right. Okay, next is best FIFA player, right. So ये थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स का सेक्शन देख लेते हैं अभी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, मीरा ऑफ मॉडर्न इंडिया वीना जयाराम, इंपॉर्टेंट, राइट। मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णा गॉट द प्राइज। यूनेस्को पीस प्राइज ये किसको मिला है, एंजेलिना मार्केल को मिला है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ वी हैव डन। नाउ विल डू द स्पोर्ट्स सेक्शन आफ्टर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज section. We'll do the sports section. Now in the sports section, the very first important, let's say with respect to FIFA. So with respect to FIFA, the best player in the FIFA is Lionel Messi. It is Lionel Messi. He's the best player and he's belongs to the country that is Argentina. In terms of women, this is in terms of men, right? Obviously, in terms of women, it is Alexia Putellas. Alexia Putellas, right? So in terms of women, it is Alexia Putellas. So best FIFA player in terms of men is Lionel Messi, and in terms of women is Alexia Putellas, right? All right. Now we'll see the next. Next is with respect to sports. The sports woman of the year
right? Female. Who got that award? Mirabai Chanu. So Mirabai Chanu got the award, and she got the award for the Sportswoman of the Year, Mirabai Chanu. And who is the Sportsman of the Year? It is male, Sharat Kamal. Sharat Kamal, right? So he got the award. Sportswoman is Mirabai Chanu and sportsman is Sharat Kamal, right? Sharat Kamal is player with respect to table tennis. So along with Sharat Kamal, there is Lakshya Sen also, who got the best player men. He is related to badminton. Mirabai Chanu, she got the award in female, right? And Sharat Kamal in men category belong to table tennis, and Lakshya Sen badminton. So they got the sports, she got the sportswoman and they got the sportsman award, right? Best. Now after this we'll see the next information, that is the ICC Women T20 World Cup. So with respect to ICC Women T20 World Cup, the winner of ICC T20 World Cup Women is Australia, right? And who is the player of the series? It is Ashley Gardner. So it is Ashlyn Gardner. He is the player of the series. So the Women T20 series won by Australia, and the player is Ashley Gardner, right? Okay. Now Dubai Tennis Championship 2023. Dubai Tennis Championship (2023). Who's the winner in terms of men? It is Daniel Medvedev, right? So Dubai Tennis Championship, the winner is Daniel Medvedev. He is from Russia. And in terms of women, who is the winner? Barbora, right? She is from Czech Republic. So in terms of men, it is Daniel Medvedev, Russia, and in terms of women, it is Barbora from Czech Republic. Dubai Tennis Championship, right? Then we will do Qatar Open. Now in terms of Qatar Open, in terms of men, who's the winner? Same, Daniel Medvedev. So you need to remember that in terms of Dubai also it is Daniel Medvedev, in terms of Qatar also it is Daniel Medvedev, right? And Daniel Medvedev belongs to Russia. Okay, okay. He's a citizen of Russia. Then women, in terms of women, in the Dubai, the woman is Barbora, who is a winner. In Qatar, the winner in terms of women is Iga Swiatek. Iga Swiatek in terms of women, right? All right. Now we'll do Queen Circuit Cup. Queen Circuit Cup. Who got the Queen Circuit Cup? Avni Prashant. Queen Circuit Cup, right? So she is the golfer, and she is the first golfer who got the Queen Circuit Cup. Okay, she is the golfer and she is the first golfer who got the Queen Circuit Cup, Avni Prashant, right? And she belongs to India. Okay, now let's just see next one, that is Khelo India Youth Games. Khelo India Youth Games. Now in the Khelo India Youth Game 2022, it is in MP New Delhi. What is the mascot of Khelo India Youth Game 2022? It is cheetah. Cheetah, right? Mowgli, right? So need to do this. Now after this, Tajinder Pal Singh.
Tajinder Pal Singh, gold medalist, Asian Indoor Athletic Shot Put. So Mr. Tajinder Pal Singh won the gold medal award in shot put. Right? Okay. Now Jeswin Aldrin. Jeswin Aldrin actually won the long jump silver medal. So Jeswin Aldrin, long jump silver medal he got. Right? So with respect to sports also we have done, right? ICC T20 Women World Cup, the winner is Australia and the player of the series is Ashley Gardner. In Dubai it is Daniel Mendev, woman is Barbara. In Qatar also the men is Daniel Mendev, the woman is Iga Swiatek. Queen Circuit Cup, Avni Prashant, she belongs to India, right? She is the first golfer who has won the award. Khelo India Youth Games, the mascot for Khelo India Youth Games is cheetah, that is Mowgli. Tajinder Pal, he got the gold medal with respect to shot put, and Jeswin Aldrin is gold medalist with respect to long jump, right? So this is the sports section. So we have done the personalities, important personalities, then we have done the sports section. Then now let's come on to military exercises. Now with respect to military exercises, the first exercise is Al Mohid Al Hindi. So Al Mohid Al Hindi is actually the exercise of India and Saudi Arabia. India and Saudi Arabia. Al Mohid Al Hindi. Second is Sea Dragon, exercise of India USA. Then Kurukshetra, India and Singapore. Right? So Sea Dragon is USA and India, Kurukshetra is India and Singapore, Al Mohid Al Hindi is Saudi Arabia and India. Right? Then Fringex or Fringex is India and France. Al Mohid Al Hindi is Saudi Arabia, Sea Dragon is USA, Kurukshetra is Singapore, and Fringex is France. Okay, now Cutlass. Cutlass Express. Cutlass Express is INS Trikhand. Cutlass Express, right? So INS Trikhand. Now after this, exercise Desert Flag 8. So exercise Desert Flag 8. Exercise Desert Flag 8 is by UAE. Right? So let's revise. Al Mohid Al Hind, Saudi Arabia, Sea Dragon, USA, Kurukshetra, Singapore, Fringex, India, France, Cutlass Express, INS Trikhand. Then exercise Desert Flag 8 is USA exercise. Okay, Desert Flag is USA exercise. After that, Cobra Warrior. Cobra Warrior involves many countries: Finland, Sweden, USA, South Africa, and Singapore. Right? So not that important. Dustlink is important. Right? Dustlink. It is India and Uzbekistan exercise. And then Dharma Guardian. Dharma Guardian is India and Japan. This we have done in the previous lecture also. Dharma Guardian is India and Japan. Dustlink is India and Uzbekistan. Desert Flag is India and USA. Kurukshetra is India and Singapore. Sea Dragon is India and USA. Al Mohid Al Hind is India and Saudi Arabia. And Fringex is India and France.
right? This is important. So after the military exercises, let's come on to books. Now books में सबसे पहले there has been a book that is written which is very important, is Victory City, and this has been written by a very important personality who was recently in the news because of an attack that is being done on him, and that is Salman Rushdie. And this book becomes very important, that is Victory City, right? So Victory City becomes very important. Okay, the second is Dismantle Story, the Untold Story of Kashmir, 370 article. So there is a book written, The Untold Story of Kashmir, article 370, and this is actually written by Anuradha Bhasin. Anuradha Bhasin, right? Then Capitalizing a Curse, how finance control the price and the value of medicine. So how finance control price and value of medicine, and how finance control the price of medicine and the value. This book is being written by Victor Ray. Victor Ray, right? Now the Kind of Child Disabled Story, Sri Lata. This is written by Sri Lata. Kind of Child Disabled Story is written by Sri Lata, right? Now the next is the Friends with Benefits India USA Story, is written by Seema Sirohi. So Friends with Benefit, India and USA Story, and this is written by Seema Sirohi, right? Now after this we have the Political Economy of colonial and post-colonial India, right? And it is written by whom? It is written by Aditya Mukherjee. So Victory City is written by Salman Rushdie. How Finance Control the Medicine is written by Victor Ray. Dismantle the Story of the Kashmir, article 370, is written by whom? Anuradha Bhasin. Then Kind of Child, the Disabled Child Story, written by Sri Lata. Friends with Benefits India USA Story is by Seema Sirohi. And the Political Economy, about the political economy, the colonial era, that is written by Aditya Mukherjee, right? Okay, so after this section of books, we'll come on to the next part. So we have done the sports, we have done the military exercises, books, important personalities. Now we'll see certain important days, right? Now firstly we'll see the World Tuberculosis Day and what is the theme along with that day. So World Tuberculosis Day, the date is not that important, but the theme is very important. So theme is what? Yes, we can end TB. Yes, we can end TB. So eliminating TB by 2025, and we'll target it by 2030. Right? So World Tuberculosis Day, that is ending the TB. So yes, we can end the TB and we'll eliminate it by 2025, and finally we will have the target by 2030. So we'll set the target by 2030. After this we'll see the World Meteorological Day. Now with respect to World Meteorological Day, what is the theme? The theme is the future of weather, climate and water across generation.
the future of weather climate across the generations. So this is World Meteorological Day, right? World Meteorological Day. Then World Water Day. The theme of World Water Day is what? Overall solving accelerated the changes to overall solve the water sanitation crisis. So what we will do? We will solve the problem with respect to water sanitation, and this overall covers the theme of World Water Day. Then International Day of Forest. The theme is simple, it's forest and health. So we'll look at the forest also, and we'll maintain the health of the forest also, and that is the theme. So World Tuberculosis Day, the theme is yes, we can end the TB. World Meteorological Day, the theme is the future of weather, climate and across the generations. World Water Day, the theme is yes, we can solve the water sanitation, right? Then International Day of Forest, where the theme is forest and health. Then International Day racial, to eliminate the racial discrimination, it is 21st March, right? The theme is not important in this, the day is 21st March, it is being celebrated, the International Day to eliminate racial discrimination, that is 21st March, right? Then Global Millet Shri Anna Conference. Now it's simple, International Year of Millets, and you know the International Year of Millets celebrated 2023. Okay, now the World Consumer Day. Now the theme is important in this World Consumer Day. You just need to remember the tagline. For example, in the forest day, the forest is being related to the health, so forest and health. With respect to water, we are solving the water sanitation crisis. With respect to meteorology, we are looking at the weather, the climate and overall water across several generations. Then in terms of tuberculosis, we are seeing that yes, we can end the tuberculosis. In terms of Consumer Day, the theme is empowering the consumer with the clean energy. So we are empowering consumers with clean energy. Right? So this is World Consumer Day. After this it is National Vaccination Day. It is overall to promote the vaccination campaign. That is the theme of National Vaccination Day. Overall vaccination campaign we'll promote. Then after this is the International Women Day. Now International Women Day, with respect to women, International Women Day, first of all it is celebrated 8th March. Now the theme is very important because it is, we have to embrace the equality, right? And this is what is International Women Day is all about. International Women Day. Now after International Women Day, Wetland Day, World Wetland Day. Again, World Wetland Day is overall conserving the wetland, restoring the wetland, celebrated 2nd February. The theme is to restore the wetland. After this, World Cancer Day. World Cancer Day is overall, the theme is close the
care gap. We have to close the care gap, right? Okay. Then safer internet day. Safer internet day. The theme of safe internet day. First of all, it is celebrated 7 February. And what is the theme? The theme is want to talk about it to make the space for conversations live online. So want to talk about it to make conversations online, right? Okay, now World Pulses Day. World Pulses Day first of all celebrated 10th February. What is the theme? Sustainable food production. Right? And 2016 was the International Year of Pulses, and 2023 is the International Year of Millets. Now after this we have the National Productivity Day. What is the theme of National Productivity Day? Is we are linking productivity with the green growth with sustainability. So that is how we are linking the National Productivity Day. We are linking the productivity with green growth, linking further it with the sustainability, right? Now International Epilepsy Day. International Epilepsy Day. So the theme of International Epilepsy Day is stigma. The date is not so important, but the theme is stigma. Then International Mother Language Day. And International Mother Language Day first of all celebrated 21st February. And what is the theme? The theme is multilingual education. And there is a need to transform the education. Then World Thinking Day. What is the theme? Our world, our peaceful future. This is World Thinking Day, right? So we'll have a quick revision. World Tuberculosis. The theme is yes, we can end the tuberculosis. Meteorological, we are linking the weather, climate along with the water crisis and water generation. World Water Day is to solve the water sanitation problems. Forest is forest and health we are looking at. Then we'll have the Consumer Day, where the theme is over the empowering the consumers with the energy transitions. Vaccination is we are doing the vaccination campaigns. International Women Day is embrace the equality. Wetland Day is wetland restoration, right? In Cancer Day, World Cancer Day, we are closing the care gap. And in terms of Safer Internet Day, we are maintaining online conversations with respect to online communications. Then Pulses Day, sustainable food production, right? Productivity Days, we are linking the productivity with sustainability and with green growth. Epilepsy, International Epilepsy Day theme is stigma. And Mother Language Day is multilingual education promotion. And World Thinking Day is our world, our peaceful thinking. With that, we have ended the complete March and April.